Okay, so now we'll be dealing with the alphabets one by one. All right. So whenever I've already sorted the alphabet alphabet A. So alphabet A एक बार दोबारा से समझा देती हूँ so that आपके लिए easier हो जाएगा. And then like top to bottom, pen lift, and this way. This is top to bottom 1, top to bottom 2, and then 3. So this way आपको टॉप टू बॉटम जाना है. इसका जो एक रॉन्ग मेथड है वो क्या है? वेन एवर यू गो डाउन टू टॉप देन टॉप टू बॉटम, दैट इज रियली अ रॉन्ग मेथड बिकॉज हमारा माइंड एक पैटर्न, एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है. ठीक है, हमने एक रूल्स पे स्टिक ऑन होना है. हैंड राइटिंग एक नर्सरी क्लास का सब्जेक्ट नहीं है बिकॉज आपकी मेजर एग्जामिनेशंस हैंड राइटिंग पर बेस्ड हैं. सो आपको अपने ब्रेन का एक पैटर्न समझना पड़ेगा. हमारा ब्रेन एक रिदमिक पैटर्न में हमेशा अच्छा वर्क करता है. रिदमिक पैटर्न इन द सेंस आपने अगर ब्रेन को एक रूल समझा दिया कि नो मैटर व्हाट वेन एवर आई विल बी राइटिंग दीज प्रिंट अल्फाबेट्स, सो उस केस में मुझे टॉप टू बॉटम चलना है. तो देन आपका हैंड अगर इस केस में यहाँ नीचे से ऊपर गया तो आपकी राइटिंग फॉर्मेशंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी बिकॉज योर ब्रेन विल नॉट बी एबल टू इंटरप्रेट कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है. सो इट इज ऑलवेज गुड टू गिव अ काइंड ऑफ अ सिग्नल टू योर ब्रेन एंड वर्क अकॉर्डिंगली. ऑल राइट. बी अगेन top to bottom, then pen lift, then semicircle, then again semicircle. All right, again pen lifts. Pen lifts is the key, and then this is very much simple. 1, then 2, and then 3. All right. C is again in one stroke, but C में ध्यान रखना कि where to start and where to end. This is again in one stroke from here to here. And never make your alphabets too bulgy because हमें time save करना है. Time save करने के लिए हमने इसको thin and skinny alphabets रखना है. This is one of a major rule to your speed handwriting. We have to keep our alphabets thin and skinny. तो C का भी हम जो radius है, जो alphabet का radius है, वो बहुत ज़्यादा bulgy नहीं रखेंगे. Then we have D like this and like this. So again 1 top to bottom and then this way 2. So this D comes with 1 pen lifts and 2 strokes. One is a round stroke that comprises of in cursive writing strokes and one is your print stroke which is standing stroke. ये हमारे print stroke का first stroke था. Because writing कुछ नहीं होती. See writing को अगर आप समझने की कोशिश करो ना तो जैसे match sticks होती हैं. ठीक है, हमारे पास loose match sticks हैं. हमने सिर्फ उन मैच स्टिक्स को अलाइंड करना है इन अ फॉर्मेटेड वे टू गिव इट अ पर्टिकुलर शेप. सो दैट इज हाउ यहाँ पर भी अगर आपकी ब्रेन को ये आइडिया मिल गया कि मेरे पास अगर प्रिंट स्ट्रोक हाथ में आया है, इट इज जस्ट लाइक कंप्यूटर में गेम होता है ना जिसमें आप पुट अप करते रहते हो उसको. सिमिलरली आपकी ब्रेन को सिर्फ आपको इनपुट डालना है जो हमारी रूल्स और नीड के साथ आ जाता है. एंड देन योर ब्रेन इज स्मार्ट इनफ कि जैसे ही आप पेपर पे लिखना शुरू करते हो योर ब्रेन विल गिव इंस्ट्रक्शंस टू योर हैंड एज इन हाउ टू प्लेस दोज मैच स्टिक्स. In this case, we have matchsticks in the format of different alphabets. So it is very simple. The phenomena is really very simple. बस आपको concept तभी ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बट मैंने इसके अंदर इतनी ज़्यादा थ्योरी को ऐड ऑन किया है. अगर आपको थ्योरी क्लियर हो जाती है तो आपकी राइटिंग लाइफ लॉन्ग के लिए सस्टेन करती है. नहीं तो आपने कई बार सुना होगा कि मैम जब तक राइटिंग क्लासेस की थी तो हमारा राइटिंग बहुत अच्छा आ रहा था एंड देन उसके बाद जैसे ही छोड़ा. सो मैं हमेशा हर एक को समझाती हूँ कि राइटिंग नीड्स मेंटेनेंस. जैसे अगर हम कोई भी चीज़ को देखें तो हमें हर चीज़ की मेंटेनेंस करनी पड़ती है. सिमिलरली राइटिंग को क्यों नहीं, ऐसा तो है ही नहीं कि एक मैजिक बैंड है कि एक बार राइटिंग इंप्रूव हो गई तो वो कभी खराब नहीं होगी. ऐसा तो कोई स्टैम्प पेपर पे नहीं लिखा है. सो इसलिए इट इज ऑलवेज गुड टू अंडरस्टैंड. अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना तो आप अपनी राइटिंग जरा सा हिलते ही आप उसको वापस ट्रैक पे ले आओगे. क्योंकि आप फिर मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मैम मेरी राइटिंग खराब हो गई है. आप मुझसे उसके बेसिस पर एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछोगे कि मैम मेरी कैपिटल केस में प्रॉब्लम आ रही है एंड स्पेशली पेन लिफ्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है. सो दैट मेक्स अ गुड क्वेश्चन जिसका आंसर मैं भी आपको बहुत
बहुत प्रिसाइसली और फटाफट से दे दूंगी, बट अगर आप मुझे बोलोगे कि मैम राइटिंग ही खराब हो गई है, तो आई नीड टू इवेलुएट ईच एंड एवरी चंक ऑफ योर हैंड राइटिंग एंड देन सो ये जो राइटिंग क्लासेस हैं ये आपके लिए तब बेनिफिशियल होंगी जब आप इसको थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन से फोकस करो कि आपकी राइटिंग कहाँ फॉल इन कर रही है. E. Now E alphabet again 1 stroke 2 stroke this way this way. आप हमेशा नोटिस करना E में ये 1 है, ये 2 है, यहाँ 3 and 4. जो ये सेंटर लाइन होती है ये शॉर्ट होती है. This is according to the Roman cursive Roman print alphabets that the center line की जो width है वो हमेशा shorter होगी as compared to upper and the lower one. इस वाले जोन से यहाँ से और यहाँ से ये कंपैरेटिवली शॉर्टर होता है. सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. नाउ अल्फाबेट F this way and this way. Again this is 1 stroke 2 stroke 3 stroke top to bottom with 1 2 and 3 पेन लिफ्ट्स. पेन लिफ्ट्स भी साथ साथ देखते जाइएगा, वो आप अपने नोटबुक में मार्क कर सकते हो कि हम कहाँ कहाँ पेन लिफ्ट करते हैं. एंड आई एम गोइंग लिटिल स्लो विद दिस, जिससे कि अगर आप मेरे साथ साथ बना रहे हैं तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू मेक इट. नाउ G is again a C, then a pen lift, standing and sleeping line. So this is 1, this is 2 and this is 3. So G comes with 3 pen lifts again, 1 C, then pen lift, then standing line and then a sleeping line. So this is very important. Now we have H, again standing line, again standing line. So this is 1, this is 2 and then this is 3. So this again comes with 1 and 2 pen lifts, like 1 pen lift and then again 1. So this is with top to bottom strokes, 2 standing strokes and 1 sleeping stroke. So H is very simple. I. So I is standing stroke and then 2 sleeping strokes. Again I am repeating, you have to make your alphabets thin and skinny. So जितना ज़्यादा अल्फ़ाबेट थिन और स्किनी रहता है उतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं. वाई? बिकॉज यही सिंपल स्टेप्स हमारी फाइनल आउटपुट में इट गिव्स यू एन एज ऑफ अराउंड से 3 to 4 minutes. और अगर 3 to 4 minutes पे आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, सपोज 2 to 3 pages के बाद, सो इट विल गिव यू एन एज ओवर द अदर्स. यू विल बी एबल टू मैनेज दैट टाइम ऑन सम अदर टॉपिक. हाँ, सो नाउ दिस इज 1, then 2 and then 3, top to bottom like this. I hope this is clear. Then J. In J we have to make a sleeping line first, then standing, and then we have to go till its middle. So this is 1 stroke, this is, sorry, we have to make a sleeping line first. No, I just erased this. Wait. So for J, we have to make a sleeping line first. So this is your first stroke, then a standing line and come up till the middle of this alphabet. So this is second stroke. All right, just with 1 pen lift, we have to make this alphabet J. I just make the line. All right, now K. Alphabet K is standing line. This is 1, then 2 and then 3. So 3 pen lifts. 3 pen lifts in alphabet K. Again the rule applies, top to bottom and pen lift. ये सिर्फ दो चीजों को रट लो. This will be very simpler. And capital print case is really used by majority of the students, क्योंकि हम cursive capitals को बहुत ज़्यादा use में नहीं लाते हैं whenever it comes to the answer writing for some higher order examinations. L, starting 1, then sleeping line 2. Again with 1 pen lift, standing line and sleeping line. हमें यहाँ पर width का आइडिया लेना है कि the width of the alphabet should not be too bulgy. तो अगर मैं ग्राफ नोटबुक की बात करूँ या आपके पास जो ग्राफ शीट्स हैं उसके 1/4 क्वाड्रेंट में आपका अल्फाबेट रहना चाहिए. I mean to say, suppose if you are practicing on a graph notebook, so then your alphabet should come in this one, in this quadrant and in this quadrant. So this should be the exact width and height of your alphabets, and whenever we are writing on a line sheet,
It is you who have to manage the width of your alphabets. Just keep in mind the graph notebook, first and fourth quadrant, your alphabet should be thin and skinny. All right, now M, first stroke, then second, then third, and then four. ठीक है, 2, 3 and 4. Again top to bottom. इसके अंदर मेजर मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे बन रहा है, यू नो, लाइक दिस. बिकॉज अगर आप नीचे से टॉप बॉटम टू टॉप जाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू मेंटेन दिस काइंड ऑफ अ विथ ऑफ योर अल्फाबेट्स. यू विल नॉट बी एबल टू मेक योर अल्फाबेट्स इन प्रोपोर्शन. ऑल राइट, so do not make these mistakes. Now N is again top to bottom, then top to bottom, then pen lift, and again top to bottom. So this is 1, 2 and 3. Again everything from top to bottom. Now O, in an oval shape. Never make alphabet O into a round ball kind of a thing. Always try to make it in an oval pattern in one stroke. That is alphabet O. Now we have P, top to bottom, 1, and then pen lift and this way. So this is P. All right, and then this one semicircle is our second stroke. Very much clear? Now we have alphabet Q. Okay, so I just extend this line so that all the alphabets should come on in single line. All right, so now Q. Q is again oval, and then you have to make this line from the center till the baseline. All right, we have to make an alphabet Q, and then from the center point you have to touch the baseline. So one stroke and two stroke like this. R, standing line, one stroke, then a semicircle, then a pen lift, and then like this. So this is 2 and this is 3. All right. Then we have alphabet S like this and like this. So try to understand, we have to split this letter into two halves. We have to split our alphabet with one stroke here and one stroke here, so that it should be a superimposing figure on each other. All right. Now T, again a sleeping line first. This is 1 and then this is 2. In T always, see in J or in capital case T, we always have to make a sleeping line first and then we have to go for the standing stroke. And whenever we are making say L, H, you know, these alphabets E and all, always a standing stroke first. So these are little difference between all these. So you really need to manage. Huh? Chalo, T, U. Now U is in one go. You have to make a standing line, then make an even thin curve. Again, do not make your alphabet too bulgy. Try to make it little smaller in size, thinner in size. V. Now V, top to bottom, one stroke, and top to bottom, two stroke. All right, never make mistake कि suppose आपने alphabet V को एक ही stroke में बना दिया, दिखने में same लगेगा, but an expert can easily identify कि yes, this alphabet is with pen lift and this alphabet is not with the pen lift thing. All right, now W. W is again standing line, then sleeping line, then slanting line, and then again top to bottom. 1, 2, 3 and 4. Because W, V, these alphabets gives you lots of trouble while writing, and उसमें कई बार हमारी width बहुत ज़्यादा uneven हो जाती है. This is one of the right method. अगर आप इस method से चलेंगे, so आपका W, आपका M, आपका G, ये alphabets आपको कभी trouble नहीं देंगे. Then we have X like this and like this. All right. So this is one stroke and then this is second stroke. We have alphabet Y like this, one stroke, and then we have second stroke Y, and then we have alphabet Z
sleeping line first stroke, then slanting line second stroke, and then again third stroke. Again, alphabet should be thin and skinny. The width of the alphabet should be little smaller, so that your alphabet should look nice. I guess इस alphabets में आपको print case capital में कोई problem नहीं है. You will be able to identify these alphabets with your, and आप इसमें से mark भी कर सकते हो कि आपको किस alphabets में problem आती है. Always go according to your need. See, I am making these lectures for the need of everyone. But again, आपको अपने लिए customize करना है. Obviously, these alphabets covers around 30% of your handwriting. तो आपको इसको करने के लिए you need to cater down all the alphabets first on a piece of paper, and believe me, these are not so difficult, and these frame around a good portion of our answer writing, and especially जब हम headings लिखते हैं so उसके अंदर इस चीज़ का बहुत वर्क आता है. So I guess एक बार जब हमारी formations clear हो जाती हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको practice कैसे करना है. So I give you those steps. So I guess this is over and I'm erasing the board. You can take the screenshot of the board also, and I've uploaded the sheets for the same also. Okay, now I'm taking another sheet for print case. Okay, so now practice. इसकी हम लोग practice कैसे करेंगे? हाँ, practice of capital case. See, first you have to do the doublings part. Doublings कैसे होगी? Suppose these are your two lines. तो आपको क्या करना है? You have to write suppose alphabet A and then again alphabet A. ठीक है? You have to write suppose B and then again alphabet B. इसको करने का फायदा क्या है? See, listen. हम जब भी एक word format करते हैं, so हमारा एक बहुत important part आता है जिसको बोलते हैं spacing. So spacing between the alphabets and spacing between the words is equally important for a legible handwriting formations. So उसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है? मैंने alphabets की doubling कर दी, because headings जब हम लिखेंगे तो headings में हमें spacing ही सबसे ज़्यादा problematic देता है. Like suppose अगर मैं आपको एक word लिख कर दूँ, suppose apple. So, यहाँ पर स्पेसिंग डिस्टॉर्ट होते के साथ ही हमारा रीडिंग पार्ट डिस्टॉर्ट हो जाता है. सो हमें एग्जामिनर को एक ईज देना है टू स्टडी आवर आंसर एंड टू गिव अस दैट एम्पल अमाउंट ऑफ मार्क्स. तो हमारा स्पेसिंग को मैनेज करने के लिए आपको एक डबलिंग ऑफ द अल्फाबेट्स पहले करना पड़ेगा. जब आपको लगे कि आपकी ये सारे ए टू ये आपका जेड तक कवर हो गया है टिल योर जी. ऑल राइट, ये आपको पूरा नोटबुक में लिखना है. उसके बाद आपका सेकंड स्टेप आता है वर्ड्स. आपको क्या करना है? सपोज ये आपकी 2 लाइन्स हैं, तो आपको एट अ स्ट्रेच अराउंड 20 वर्ड्स लिखना है. जैसे कुछ भी आप वर्ड स्टार्ट कर सकते हो. सपोज आप ए टू जी तक के वर्ड्स ले लीजिए, ऑल इन कैपिटल केस. लाइक सपोज यू कैन स्टार्ट विद कुछ भी, एनीथिंग, नो, आर्म्स. देन इसके बाद आप बी से ले लीजिए, सपोज बॉम्बे. सो यू हैव टू मेंटेन. ऑल राइट. सो अब इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं? आप देखिए कि यहाँ पर वी आर मेंटेनिंग द स्पेसिंग बिटवीन द अल्फाबेट्स एंड वी आर मेंटेनिंग द हाइट्स ऑफ द अल्फाबेट्स. इट शुड बी सेम. अभी तो मैं लाइन शीट पर बात कर रही हूँ, बट सिमिलरली अब हमारा नेक्स्ट स्टेप इसका आता है. वंस देखिए ये इसी स्टेप्स में चलिएगा. सबसे पहले डबलिंग ऑफ द अल्फाबेट्स ऑन अ लाइन शीट, देन यू हैव टू प्रैक्टिस दीज वर्ड्स एटलीस्ट ए टू जी. यू हैव टू प्रैक्टिस 5 वर्ड्स ऑन लाइन शीट्स. सेल्फ चेक कीजिए. जब आपको लग रहा है कि यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आपके सभी अल्फाबेट्स एक पर्टिकुलर लाइन में आ रहे हैं विद अ प्रॉपर हेडिंग जिसको जोन्स बोलते हैं, सो उसके बाद आप थर्ड क्या करेंगे? आप ब्लैंक शीट पे प्रैक्टिस करोगे.
क्योंकि यूपीएससी सीएससी एग्जाम्स में मैं देखूं या कई बार कई जुडिशरी एग्जाम्स में हमें ब्लैंक शीट मिल जाती है। सो अब अगेन अगर हमारे पास एक ब्लैंक शीट है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन रिटन है, ऐसे ही होता है ना, तो उसके बाद आपको यहाँ पर हेडिंग लिखनी है। तो सपोज आप यहाँ पर एक हेडिंग लिख रहे हो, तो आपको वो आइडिया होना चाहिए कि ब्लैंक शीट पे मेरा हाइट ऑफ द अल्फाबेट्स, द स्पेसिंग बिटवीन द अल्फाबेट्स इवन आ रहा है, एंड स्पेशली द बेस लाइन। आपकी बेस लाइन ब्लैंक शीट पर बहुत मैटर करती है। So whenever we are writing on the blank sheet, there are certain factors which really need to be taken consideration of. The most important one is the baseline. And baseline को correct करने के लिए पहले आपको यहाँ line sheet पर लिखना पड़ता है. We have to practice on a line sheet. एकदम से jump करके blank sheet पर नहीं आना है. सो whenever हमारा ब्लैंक शीट पे जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर हमारी हेडिंग्स को एक प्रॉपर बेसलाइन, एक प्रॉपर स्पेसिंग के साथ रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज उसके बिना लाइक हमारा जो आंसर है वो या तो असेंडिंग दिखेगा या डिसेंडिंग जाता हुआ मिलता है, विच इज नॉट राइट। सो ब्लैंक शीट्स पे जब हम प्रैक्टिस करेंगे, सो अगेन विल बी टेकिंग इस पे लॉन्ग हेडिंग्स। सपोज जैसे कि आपको अपना आंसर फ्रेम करना है तो उसके आप लॉन्ग हेडिंग्स एंड शॉर्ट हेडिंग्स लिखते हैं, सो यू हैव टू टेक देम अकॉर्डिंगली। ऑल राइट, सो दिस इज हाउ वी मेंटेन, we practice for the capital case, because capital case जब हमारे एक बार practice हो जाएगा with these doublings part, with the words and with the blank sheet, तो उसके बाद हमें इसके अंदर पूरा पूरा आंसर तो लिखना ही नहीं है। You know, these capital case alphabets are never used for writing your complete answers. ये obviously हमारे सिर्फ highlighters, जैसे मैंने starting of this class बोला था कि इसकी जो need आती है हमें, वो in the format of an highlighters आता है। So highlighters में इसको put in करने के लिए हमें ये चीजों का आइडिया होना चाहिए। ओके, नाउ जब हम लोग इस टॉपिक की बात कर ही रहे हैं एंड वी स्टिल हैव टाइम, तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ। इंग्लिश हैंडराइटिंग में हमें जब कैपिटल अल्फाबेट्स की हाइट को स्पेसिफाई या मैनेज करना होता है, सो उसमें हमारे कुछ फैक्टर्स आते हैं विच इज कॉल्ड ग्राफोलॉजिकल फैक्टर्स। ग्राफोलॉजी क्या है, कैसे है, ये सब मैं अपनी पहले की क्लासेस में आपको समझा चुकी हूँ। आई जस्ट टेक एन अनदर कलर। ओके, सो अब हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है फर्स्ट, स्लांट का। स्लांट मतलब विद रिस्पेक्ट टू योर कैपिटल अल्फाबेट्स। आपकी देखिए जो स्लांट होता है राइटिंग का, वो एक होता है वर्टिकल, एक होता है राइट और एक होता है लेफ्ट स्लांट। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज दिस इज अ वर्टिकल स्लांट कैपिटल ए, दिस इज अ राइट स्लांट कैपिटल ए, एंड दिस इज योर लेफ्ट स्लांट कैपिटल ए। सो हमारी राइटिंग का जो पैटर्न है, वेन एवर वी कम अप टू आर राइटिंग पैटर्न, so we have to go for the vertical slant handwriting. We never have to go to the little right and we never have to go for the left hand side. ठीक है, so this comes with respect to our print case alphabets. We always have to keep the slant of our alphabets as vertical slant. And then second one is, which is very much important, is called zones of your handwriting. अब देखिए जोन्स का चैप्टर ऑब्वियसली मैंने अपनी थ्योरेटिकल क्लास में काफी ब्रीफ अप किया था, बट वेन एवर वी कम अप टू द जोन्स हियर, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हेन वी आर राइटिंग ऑन दिस line sheet, so this is your upper margin and this is your lower margin. So we have to keep zones. There are just two zones, but we are writing in upper to middle. There is no lower zone alphabet in our capital case English handwriting. So we need to manage between these two lines only. सो इट इज क्वाइट सिंपलर। तभी मैं बोल रही हूँ कि जो ये प्रिंट कैपिटल की राइटिंग होती है, इससे हमारा स्पीड बढ़ता है। देयर इज नो पॉइंट दैट वी कैन लूज ऑन द स्पीड। व्हाई? बिकॉज देयर आर नो जोन्स स्पेसिफाइड. Capital case alphabets are always giving us an edge to write between an upper line and a lower line. There is no the lower zones in English. Even in the small case alphabets,
it covers around 80% of our write-up. And whenever we are writing in a small case alphabets, yes, there are various zones. We need to maintain that differentiation between all the three zones. But out here, we are at a very simple state of writing between just these two lines. So similarly, we have to practice with our zones, like we have to take two lines first and we have to write in between these. And whenever it comes to the blank sheet, once you are comfortable enough to write on the line sheet between these two lines, you can come up on a blank sheet. Now suppose this is a blank sheet. Suppose this is a blank sheet. So you have to write, you have to maintain your heights, your zones automatically by yourself. So never switch to a blank sheet in an hastiness. Always practice on line sheets first, and then my advice is to move on to the blank sheets, because you will get ample of time in order to practice your answers whenever you are preparing for any examination on blank sheets. But these line sheets, as and when I always say that use pencils as a part of your handwriting journey. So similarly, use of pencil and use of line sheet is very important in order to curate your writing patterns. So for today, I have covered the print capital case, with the need of the handwriting, with the rules of print case capital, and then I have shown you all the alphabets in detail how to make that. So I hope you will be able to catch up my pace, because in my next class, next video, I'll be sharing the methods to teach you small print and small cursive. So that is a very important class, because for all those print writers, this print case capital is very much important for both the kind of the writers. But whenever you are there to format your writing, अब हमें आगे डिसाइड करना है कि whether we have to go for the print, true print handwriting, or we have to go for print plus cursive. All right. So I hope you are able to manage this. सब समझ आ रहा होगा, but theoretical part को miss नहीं करना है. Theoretical part is equally important in order to understand a particular topic. अच्छा, इसके अंदर one more thing I would like to add is, जब भी हम लोग लाइन शीट पर वर्क करते हैं, लाइक कई बार मेरे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि मैम अगर हम ये पूरा सपोज टच करते हैं, so then ये alphabets का size थोड़ा बड़ा दिखता है, it looks extended. So my advice is कि once you are writing these alphabets, first of all during the formation, so you can take all the heights joined from the upper line and the lower line, and then gradually with the time what you can do is you can leave a little space, adhere to the baseline, leave a little space and then write. I just show you. See, I am just leaving this much amount of a space from upside, because this is as compared to your line sheet, this is an actual amount of dimensions which looks presentable. But for the practice, yes, you have to practice with this kind of a format, and then once you are pro with this, then you have to go with leaving a little space ahead and touching the baseline. This baseline is very important. You never have to leave your baselines. Go with this. All right. अब इसका एक छोटा सा पार्ट कर लेते हैं, विच इज कॉल्ड द स्पीड राइटिंग. देखिए, स्पीड राइटिंग डिफरेंटली नहीं होती. स्पीड राइटिंग हमारे मेजर अल्फाबेट्स में से ही आती है. वंस वी आर थ्रू विद द राइटिंग फॉर्मेशंस, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है स्पीड राइटिंग का. सो स्पीड राइटिंग के लिए आपको क्या करना है? सपोज दीज आर योर लाइन्स. You have to write A to Z faster like this. All right. And इसका मैं आपको एक tried and tested time बताती हूँ. अब हम धीरे धीरे अपने टाइमिंग्स पर आ जाएंगे. Is 45 seconds. You have to complete A to Z in 45 seconds. So use a timer, take a stopwatch or use your mobiles on your stopwatch and उसमें आप बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए. Unless, अब देखिए 45 seconds में A to Z है, सपोज आपका 52 में आ रहा है, तब भी लोअर डाउन टू, मतलब इसके साथ +2 एंड -2 तक चलेगा. बट ये भी मत सोचिएगा कि 45 सेकेंड्स का मुझे 30 सेकेंड्स में फिनिश हो रहा है. हमारा ब्रेन हर चीज को प्रोसेस
करने के लिए एक पर्टिकुलर मॉडरेशन, एक पर्टिकुलर टाइम मांगता है. सो जब हम इसको 45 सेकेंड्स 47 तक भी ला रहे हैं या हम इसको 43 तक भी ला रहे हैं, सो वो हमारा बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड टाइम है. दिस इज योर फर्स्ट स्टेज वेर इन यू आर एनकाउंटरिंग द स्पीड राइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. सो A to Z in one go at one setting in 45 seconds is a good speed writing to start with. मतलब this is your first step, first interface with it. इसके साथ साथ हम लोग धीरे धीरे इस टाइम को लोअर डाउन करते जाएंगे, बट कैपिटल केस का एक टेस्टेड टाइम है विच इज 45 सेकेंड्स. इवन अगर आप स्पीड राइटिंग सेक्शन में जाके वहां से वर्कशीट्स भी आप डाउनलोड करेंगे, सो वी हैव गिवन यू दोज वर्कशीट्स एज वेल वेयर इन यू नीड टू प्रैक्टिस दीज शीट्स in seconds, in 45 seconds. So हर बार लिखिए, अपना टाइम नोट डाउन कीजिए, फिर नीचे लिखिए till you achieve your target of 45 seconds. All right, so this was it for today's class. In my next class will be very important for the formations also and for the speed writing also. So for the speed writing, once you achieve this speed at 45 seconds, then only go for the small case alphabets. Otherwise, you will get confused and हमें step by step आगे बढ़ना है because we have to attain that 27 words per minute. उसके लिए starting हमने आज यहीं से की है कि अपने capitals को format कर लीजिए, capitals की speed को justify कीजिए so that again you have to move ahead with the small case alphabets. So thank you so much for the day. See you in the next class.